Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear ones. Hope so you all are well by the grace of Allah Almighty and doing your work in a best way. Students, in our previous lecture we have completed exercise 5a and also we have studied about addition and subtraction of integers. Starting, let's take a quick reference. As you can see about the addition of integers. We know that 4 plus 3 is equal to 7. Yes, of course. And if here is minus 4 and minus 3. Students, we will add 4 and 3. The answer is 7, but the common sign will be here. And also, you can see here, plus 4 plus minus 3. अगर किसी नंबर या इंटीजर के साथ कोई भी साइन मौजूद नहीं हो, इट मीन्स वो जो इंटीजर होगा वो प्लस का होगा, पॉजिटिव का. सो प्लस 4 प्लस माइनस 3, वी नो डैट प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, which shows that 4 minus 3 is equal to 1. And also, if minus sign is with 4 greater number, then we will subtract the value. और साइन हम वो यूज़ करें जो कि लार्जेस्ट वैल्यू के साथ होगा. एज 4 के साथ जो साइन है वो माइनस का है, डेट्स वाई हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे. Now let's move towards the multiplication of integers. How we can multiply integers. Here is the definition given of multiplication, that is मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन. स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी नंबर्स को इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो इट मीन्स हम उसे ऐड करते हैं. एक ही नंबर को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स क्या होता है, रिपीट होके ऐड होता है. सो द मल्टीप्लिकेंट इज़ एडेड द नंबर ऑफ टाइम्स एज द मल्टीप्लाई. What is multiplicand and what is multiply? Here you can see that in the expression 5 multiplied by 3, the number 5 is multiplying to 3. So the number 5 is called multiplicand and 3 is called multiplier. Now add 5 means multiplicand 3 times. Students, 5 यहाँ पे multiplicand है और 3 क्या है, multiply है. अब 5 3 से multiply हो रहा है, it means 5 3 times add होगा. 5 plus 5 plus 5 and the answer is equal to 15. इफ़ द मल्टीप्लायर इज़ अ नेगेटिव नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लायर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है. अगर मल्टीप्लायर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो देन हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ लेट्स सी एट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट द नंबर ऑफ टाइम्स एज द मल्टीप्लायर. अगर हमारे पास मल्टीप्लायर नेगेटिव नंबर हो देन हम मल्टीप्लिकेंट को, जो मल्टीप्लिकेंट का एडिटिव इन्वर्स होगा, उससे हम उतने टाइम्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एट द नेक्स्ट पेज. एज स्टूडेंट्स here you can see that -5 multiplied by 3. स्टूडेंट्स यहाँ पे -5 मल्टीप्लिकेंट है और 3 मल्टीप्लाई है. अब -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से मुराद -5 इज़ एडिंग 3 टाइम्स. You can see here -5 plus -5 plus -5 is equal to 15, -15. As minus is common, so here is -15. Another example is -3 multiplied by 5. It means -3 is multiplicand and 5 is multiplier and -3 is adding 5 times. So -3 plus -3 plus -3 plus -3 plus -3 is equal to 15. As minus sign is common, so -15. Or students, if -3 is multiplying to 5, then -3 will be added 5 times. You can see here -3 plus -3 plus -3 plus -3 plus -3. It is also the result is -15, and when -5 is multiplying to 3, then the answer is again -15. स्टूडेंट्स, हम -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा. This is easily verified on a number line. How we can represent on a number line? You can see here is number line and the numbers are starting from 0. 0 is at the center and onward at the right side are positive numbers and backward at the left side are negative numbers. So how we can represent -3 multiplied by 5 on a number line? Students, it means -3 will be added 5 times. So first of all we will move towards the number -3 and then with a gap of 3 move to the left. You can see here first we will move -3 and then 1 2 3 with a gap of 3 towards the next number, with a gap of 3 towards again next number, and with a gap of 3 again move towards the next number, again with a gap of 3 move towards the next number. We will repeat this process 5 times as -3 is multiplying 5 times. So -3 will be added 5 times, 1 2 3 4 and 5. So the answer is -15. This is how we can represent multiplication process on a number line. Now let's move towards an example, that is example number 9.
Grandma received 4 chocolates from each of her 3 grandchildren. Students, grandma 4 chocolate receive करी अपने each grandchild से. So how many chocolates does grandma receive? So grandma के पास total chocolate कितनी होंगी जो उसने receive की होंगी? It means 4 chocolate from each grandchild. हर grandchild से 4 chocolates हैं और total grandchildren कितने हैं? 3 हैं. So it means 4 chocolate will be added 3 times. So 3 multiplied by 4 is equal to what? Let's see the solution. This is simple to understand. If grandma receive 4 chocolates from one child, so it means the chocolates are 4. And if she receive 4 more chocolates, अगर वो 4 chocolates और receive करती हैं from another grandchild, then it means 2 multiplied by 4 is equal to 8. और अगर grandma 4 chocolate और receive करती है from another grandchild, then 3 multiplied by 4 is equal to 12. So by adding 4, 4 and 4, the answer is 12. We will add 4 3 times. Now let's see the representation on a number line. You can see here the number is 0, 4, 8 and 12 at the right side and minus 4, minus 8 and minus 12 on the left side. Here if we don't represent 1, 2, 3, there is no any problem. So students, these lines, small lines, represent the numbers 1, 2 and 3. And also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we will move towards the number 4 and then again with a gap of 4, 1, 2, 3 and 4. Move towards the next number. Again with a gap of 4, move towards the next number. This process will repeat 3 times and the answer is 12. It means grandma received 12 chocolates from 3 grandchildren. Okay students, do yourself example number 10. Students, as we know that it is difficult to show multiplication or division of two negative numbers on a number line, but the rules of mathematics makes it easy for us. So how? Let's see. Students, here you can see that the rules for multiplication in case of like sign or unlike sign. If two numbers are present and also they are multiplying to each other but their signs are like signs, then it means the result will be positive. स्टूडेंट्स, इट मीन्स अगर कोई से भी दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके साथ जो साइन है वो प्लस का हो, देन इट मीन्स उनका जो रिज़ल्ट आंसर आएगा उसके साथ जो साइन होगा वो कौन सा होगा? प्लस का ही होगा. अगर कोई से भी दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उन दोनों के साथ नेगेटिव साइन मौजूद है तो रिज़ल्ट के साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेशन के केस में रिज़ल्ट के साथ प्लस का साइन होगा. और अगर ऐड हो रहे हों एडिशन के केस में, देन एडिशन के केस में हम दोनों नंबर्स को ऐड ही करेंगे, लेकिन सिंबल हमारे पास जो साइन है वो कॉमन आएगा. वो कौन सा होगा? माइनस का होगा. स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है. मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट होगा. जो रिजल्ट आप मेंशन करेंगे उसके साथ प्लस का साइन होगा. नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास अनलाइक साइंस हो, ये लाइक साइंस थे. अगर अनलाइक साइंस हो, अगर दो नंबर्स, दो इंटीजर्स जिनमें से एक के साथ माइनस का साइन हो और दूसरे के साथ प्लस का साइन हो, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर मेंशन करें, देन आंसर के साथ जो साइन होगा वो माइनस का होगा. इसी तरह से अगर कोई से भी दो इंटीजर्स हैं, एक के साथ अगर प्लस का साइन है और सेकंड वन के साथ माइनस का है, तो उनके आंसर के साथ जो साइन यूज़ होगा वो माइनस का होगा. स्टूडेंट्स, इसे आपने अच्छे से अंडरस्टूड करना है और इसे याद रखना है. Students, here is mentioned that I have already explained through these signs. Now next move towards the rules and properties of multiplication of integers. Students, here you can see that the rules for the multiplication of integers may now be summarized as follows. Rule number 1, the product of two integers of like signs is a positive integer. Students, अगर हमारे पास कोई सी भी दो नंबर्स हैं, उनके जो साइन है वो लाइक साइन है. लाइक साइन मीन्स एक जैसे साइन है. अगर हम दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15. बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, मीन्स दोनों के जो साइन है वो लाइक साइन है. सो अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे सो आंसर हमारे पास 15 है और 15 पॉजिटिव इंटीजर है. सेकेंड वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस इन केस ऑफ अनलाइक साइन इज़ अ नेगेटिव इंटीजर. स्टूडेंट्स, अगर अनलाइक साइंस हैं मीन्स के साइन एक जैसे नहीं हैं, तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वह नेगेटिव इंटीजर होगा. लेट्स सी, -3 मल्टीप्लाई बाय +5, दोनों जो साइन है वो सेम नहीं है. डेट्स वाई जो रिजल्ट है वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर है. एंड ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर एज माइनस प्लस माइनस.
मीन्स अगर एक इंटीजर हमारे पास एक इंटीजर के साथ माइनस का साइन हो और दूसरे इंटीजर के साथ प्लस का साइन हो तो उनके आंसर के साथ जो साइन होगा वो कौन सा होगा, माइनस का होगा। यहाँ पे एक इंटीजर के साथ माइनस का है, दूसरे के साथ प्लस का है, सो रिजल्ट में इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव है, इसके साथ माइनस का साइन है। Next property, the absolute value of the product of two or more integers is equal to the product of their absolute values. Now student, what is it mean about absolute value? Students, absolute value वो वैल्यू जिसमें हमारे पास अगर कोई सा भी नेगेटिव नंबर है तो वो नेगेटिव नंबर नेगेटिव नहीं रहता है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। It means the absolute value of a number is never negative. Here you can see that an example, that is 3 multiplied by -5। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 5 है उसके साथ माइनस का साइन है और एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं रहता, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन सी डेट एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसे, ये जो 2 स्ट्रेट लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -5। अगर हम -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें सो रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा, +5 होगा, माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ माइनस साइन नहीं था। स्टूडेंट्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर absolute values, so the result is 15. Now next one, the following additional properties of multiplication of integers can be verified. That is, the product of two integers is also an integer. Students, अगर हम कोई से भी इंटीजर, दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। For example, 2 and 3 are integers, yes of course, and 2 multiplied by 3 is equal to 6, and 6 is also an integer. So similarly, -2 and -5 are integers, and their product -2 multiplied by -5 is equal to +10. So 10 is also an integer, and we know that if two like signs minus and minus are multiplying, then the result will be positive, and the answer is +10 is also an integer. This is called the Chloe property of multiplication of integers. Now student, next one, the product of two integers remains the same if they interchange their places. For example, 2 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by 2. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई से भी दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और अगर हम उनकी पोजीशन चेंज करें तो रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। एज यू कैन सी हेयर, इफ़ आई चेंज द पोजीशन ऑफ 2 multiplied by 3 as 3 multiplied by 2, then the answer is same in both cases. Students, another example is 5 multiplied by -2 is equal to -2 multiplied by 5. Here position of -2 is changed, so the answer is not changed, answer is -10. This is called the commutative property of multiplication of integers, as the integers are multiplying. That's why these properties are called multiplication. Next one, the product of any 3 or more integers remains the same irrespective of the order in which the multiplication is carried out. Students, अगर हम कोई से भी 3 इंटीजर्स या फिर 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करने के बाद, उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद उनका मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, मीन्स रिज़ल्ट दोनों केसेस में ठीक होगा। फॉर एग्जांपल, -2 multiplied by 3 multiplied by 5. If I solve it, -2 multiplied by 3, then the answer is -6, and then multiply to 5, the answer will be -30, that is mentioned here. Or if I change the order or grouping, as you can see here, -2 separate and 3 multiplied by 5, then 3 multiplied by 5 will be 15, and 15 twos are 30. Also the answer is -30. This is called the associative property of multiplication of integers. Next one, the product of an integer and 1 is the integer itself. स्टूडेंट्स, अगर हम 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 के इक्वल नहीं होगा, इंटीजर इटसेल्फ होगा। एज यू कैन सी हेयर, -2 multiplied by 1 is equal to -2, and 5 multiplied by 1 is equal to 5, the integer itself. This is called the multiplicative identity of integers. That is 1. Next one, the product of an integer and 0 is always 0. Students, 0 को अगर हम किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इंटीजर इटसेल्फ नहीं होगा, इनफैक्ट 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, -2 multiplied by 0 is equal to 0. Also 8 multiplied by 0 is equal to 0. सो रिजल्ट हमारे पास 0 के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट वन, फॉर एवरी इंटीजर एक्सेप्ट 0 मीन्स 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 1. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सा भी इंटीजर है और उससे हमने उस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर होगा वो 1 के इक्वल होगा। ईच इज़ नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर. लेट्स सी हाउ.
For example, 6 multiplied by 1 over 6. Here exists an integer that is 1 over 6. If we multiply 1 over 6 to 6, the answer is equal to 1, as 6 will be cancelled by this. So the answer is 1, which means that the multiplicative inverse of 6 is 1 over 6. Now minus 2 multiplied by 1 over minus 2 is equal to 1. Minus 2 will be cancelled by this minus 2 and the answer is equal to 1. Now students, we can say that there exists an integer which we can say multiplicative inverse of that integer. Next one. For any three integers, the product of the first integer and the sum of the other two is equal to the sum of the product of the first and the second and the product of the first and the third. Thus, you can see here. So what does it mean? Let's understood by an example, that is 2 multiplied by 4 plus 5. Students, here is mentioned that the product of first integer. Here is first integer, this one second, and this one is third integer. So the product of first integer means this product of first integer and sum of other two. So sum of other two is equal to the sum of product of first and the second. Sum, here you can see that the sign of sum of the product of first and second. Here you can see that product of first and second, 2 multiplied by 4 means 2 multiplied by 4, and the product of first and third, that is here 2 multiplied by 5. So in both cases the result will be same. If we solve 4 plus 5, the answer is 9, and 9 multiplied by 2 is 18. And also if we solve 4 multiplied by 2, the answer will be 8, and 5 multiplied by 2, the answer will be 10. So by adding 8 plus 10, the answer is 18. So it means both are equal. Students, same in this example. This is called the distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. Students, this was about multiplication of integers. Hope so you all understood it well. Now let's move towards division of integers. Here is division of integers. Division is the reverse process of multiplication. Students, division multiplication का reverse process है, as we have studied about subtraction, that is reverse process of addition. Two integers can be divided by multiplying the numerator with multiplicative inverse of denominator. So students, what is the meaning of what is meant by numerator and denominator? So let's see. Here you can see that 56 divided by minus 8. The above value is called numerator and the below value given denominator. So this is called numerator and this is called denominator. Now let's see, to divide 56 by minus 8 implies finding a number by which minus 8 should be multiplied to give 56. The obvious answer is minus 7. How? स्टूडेंट्स, डिवीजन प्रोसेस में अगर कुछ अभी दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हों, सो हम न्यूमरेटर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. सो लेट्स अंडरस्टूड थ्रू दिस एग्जांपल. यू कैन सी 56 divided by minus 8. So we know that the minus 8 is denominator and its multiplicative inverse will be 1 divided by minus 8, as you can see here. So we have to multiply the multiplicative inverse of denominator with numerator. So it means 1 divided by minus 8 is the multiplicative inverse of denominator and it is multiplying to 56. So by solving, the answer will be minus 7. Or you can see here, minus 8 multiplied by dash means what, which is equal to 56. स्टूडेंट्स, माइनस 8 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमारे पास 56 होगा? यस ऑफ कोर्स, माइनस 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, इनफैक्ट माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर 56 होगा. एज माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर. So I can say it as 56 divided by minus 8 is equal to minus 7, as minus 8 multiplying to minus 7, the answer is 56. Let's see an example. There are 13 pencils in a bag. 4 pencils are given to each child. How many children get 4 pencils each? How many are left? Students, एक बैग में 13 पेंसिल्स हैं और हर चाइल्ड को 4 पेंसिल्स दी गई हैं. सो हमने ये बताना है कि कितने चाइल्ड को 4 पेंसिल्स मिली हैं और रिमेनिंग कितनी पेंसिल्स रह गई हैं. सो हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन.
The total pencils are 13 and 4 pencils are dividing to each child. It means 13 divided by 4. So what will be the answer? This is simple too. 13 minus 4 is equal to 9. स्टूडेंट्स पहले हमारे पास 13 पेंसिल्स टोटल है. टोटल पेंसिल्स 13 है. 13 में से फर्स्ट चाइल्ड को 4 पेंसिल्स दी, मीन्स रिमेनिंग हमारे पास 9 रहेगी. 9 पेंसिल्स में से 4 पेंसिल्स अनदर चाइल्ड दूसरे चाइल्ड को दी, तो रिमेनिंग 5 रहेगी. अब 5 पेंसिल्स में से 4 पेंसिल्स एक और चाइल्ड को दी, सो रिमेनिंग हमारे पास 1 रह गई. सो इट मीन्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल्स टू 3 चाइल्ड्स as 1, 1 and 1 3 childs, and the remaining pencils are left, that is only 1. 3 children get 4 pencils each and 1 pencil is left over. Now students, understood example number 12 by yourself, and we are going to move towards the rules and properties of division of integers. As you can see here, the rules for the division of integers may now be summarized as follows. Rule number 1, for integers of like sign. Now you all are well familiar from the like sign that are same signs. The quotient is positive. Students, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हों और उनके साइन एक जैसे हों, इट मीन्स जो क्वोशंट होगा उसका साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा. जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. सेकेंड वन, फॉर इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस. अगर हमारे पास अनलाइक साइंस हो, मीन्स साइन सेम ना हो, द क्वोशंट इज नेगेटिव. क्वोशंट नेगेटिव होगा, आंसर हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटीजर. The absolute value of the quotient is found by dividing the absolute value of the dividend by the absolute value of the divisor. Students, अगर हम absolute value of dividend और divisor दोनों की absolute value को अगर हम solve करें तो result quotient हमारे पास होगा absolute value के form में ही. Now, if an integer is divided by another integer, the result is not always an integer. अगर एक integer को हम दूसरे integer से divide करें, we have already studied about it. जो रिज़ल्ट हमारे पास ऑलवेज इंटीजर मीन्स के रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि इंटीजर ही होगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ 23 इज़ डिवाइडेड बाय -5, द रिज़ल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर. 23 डिवाइडेड बाय -5, द आंसर विल बी इन फ्रैक्शन एंड दैट डजंट बिलोंग टू इंटीजर. Now let's see example 13. Simplify the following. Part number 1 I am going to explain, and part number 2 do yourself. Here are two methods to solve it. Let's see the first one and then move towards the second one. Students, here you can see that here is -15 multiplied by 8 and the center sign is plus, and -15 multiplied by -6. In both sides the values are multiplying and at the center the values are adding. So you can see that something is common. Yes, -15. So -15 in this value and in the second value. In both values the -15 is common. So let's see it's common. We will write it just one time as we are going to take it common. -15 multiply as it is, and the remaining number in this value is 8, and plus sign as it is. We have taken -15 common, so the remaining value will be -6. Now let's solve it. 8 plus -6. If we solve 8 plus minus will be minus. So 8 minus 6 is equal to 2. स्टूडेंट्स, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पे भी प्लस ही होगा, माइनस यूज नहीं होगा. सो -15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -30, एज माइनस साइन विल रिमेन हेयर सेम. और अनदर मेथड इज -15 multiplied by 8 plus -15 multiplied by 6. First we will solve the multiplication process and then we will add both values. So -15 multiplied by 8 is equal to -120, and also plus will be as it is. -15 multiplied by -6 is equal to 90. Here you can see that minus and minus are multiplying, which means the answer will be positive. So here we will not mention negative sign. Now let's solve -120 plus 90. We know that minus plus is equal to minus, means we will subtract both of these values. 120 minus 90, the answer will be 30. So students, you can see that there is minus sign with larger value. We will subtract both of these values, the result is 30, and there is minus sign. Students, 120 एज लार्जर वैल्यू, सो 120 के साथ माइनस साइन है, इट मीन्स आंसर के साथ भी कौन सा साइन होगा? माइनस का होगा. ओके, अंडरस्टूड एग्जाम्पल सेकेंड वन बाय योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 14. That you can see here, fill in the blanks with suitable number to make the statement correct. How we can make this statement correct? Let's fill the suitable number.
Part number 1 is 7 multiplied by minus 2 plus dash is equal to 7 multiplied by minus 2 plus 7 multiplied by 3. Students, here you can see that 7 multiplied by 2 and here is plus sign, and 7 multiplied by 3. If you think a little bit, so here is a concept about distributive property of multiplication over addition. Yes, that is the right distributive property of multiplication over addition. So it means 7 is here and minus 2 is here, but here is the number 3 is missing, so I am writing 3 here. Now you can see that 7 multiplied to minus 2 here, and also 7 multiplied by 3, 7 multiplied by 3 here, and the plus sign is as it is. Let's solve another. 3 multiplied by minus 4 plus 2 is equal to 3 multiplied by dash plus 3 multiplied by 2. It's also distributive property of multiplication over addition. As 3 is multiplying to minus 4, 3 is multiplying to minus 4, and also 3 is multiplying to 2. So 3 multiplied by, yes, of course, here is missing minus 4. And also 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 2, and this sign is positive. Students, this was about division of integers. Now move towards the exercise 5b.